हेलो स्टूडेंट्स। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में आज हम लोग ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए एक बार मैं आपको डेटा शेयर कर देता हूं। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम जो मैंने आपको टेबल बनाया था, एक ट्रायंगल बनाया था। इस ट्रायंगल में जो सबसे लोअर लेवल था वहां पर ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम उसको सपोर्ट करता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम लोग देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम: batch transaction processing, real-time transaction processing, data validation, historical significance of a transaction processing system and manual transaction system। यानी बैच जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम की, सबसे पहले तो ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम होता क्या है। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम डे टू डे एक्टिविटीज के लोअर लेवल मैनेजमेंट के लिए या ऑपरेशनल मैनेजमेंट के लिए जो डे टू डे एक्टिविटीज होती है उसके लिए होता है। तो इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं: बैच ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, रियल टाइम ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, डेटा वैलिडेशंस, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम एंड मैनुअल ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम क्या है? ट्रांजैक्शन event generating or modifying stored data in an information system. Batch transaction processing collect transaction data as a group और batch। जैसे batch से पता चल रहा है कि batch transaction processing collect transaction data as a group oblique batch। प्रोसेस लेटर टाइम डिले, थोड़ा सा टाइम डिले हो सकता है। रियल टाइम ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग में रनिंग टाइम में जो प्रोसेसिंग होती है ट्रांजैक्शंस की उसी को हम रियल टाइम कहते हैं। रनिंग टाइम का मतलब होता है करंट टाइम में। इमीडिएट डेटा प्रोसेसिंग, डेटा वैलिडेशन यूज्ड टू चेक एंट्री ऑफ ट्रांजैक्शन डेटा। Historical significance of a transaction processing system: unique manual transaction systems, business system that operate without the use of machine। TPS characteristics में कंटिन्यू है: they collect, store, modify and retrieve the transaction of an organization। यानी कि they collect, store, modify and retrieve the transaction of an organization। Direct support business operation must be designed in conjunction without the organization's procedures, main information process, collect and storage। फोर important characteristics of ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम: रैपिड रेस्पॉन्स यानी फास्ट परफॉर्मेंस होती है, रैपिड रिस्पॉन्स टाइम, रिलायबिलिटी, लो फेलियर रेट, क्विक एंड एक्यूरेट रिकवरी, बैकअप एंड रिकवरी प्रोसीजर, इनफ्लेक्सिबिलिटी, every transaction processed in same way regardless of conditions, control processing support and organizations operation। एग्जाम्पल्स ऑफ बैच ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग जैसे क्लियरेंस ऑफ चेक्स। बैच ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है स्टूडेंट क्लियरेंस ऑफ चेक। जैसे चेक क्या होता है कि जब हम किसी बैंक में जाते हैं तो वहाँ पर एक ड्रॉप बॉक्स होता है जिसमें कि हम चेक डाल देते हैं और शाम को सारे चेक एक साथ ड्रॉप बॉक्स से जो वहाँ का एम्प्लॉय होता है वो उठाता है और एक साथ क्लियर करता है। अदर फॉर्म्स ऑफ पेपर आउटपुट: large batch, mainframe, PC and magnetic tape, payroll or stock information, employee hours worked, overtime earned, payroll master file updated, payslip created, all employees, often run at night, less demand for information system। लार्ज बैच का मतलब बैच में जो एक साथ प्रोसेसिंग होती है उसी को बोलते हैं। तो लार्ज बैच का मतलब एक साथ एम्प्लॉय की सैलरी आना, पेरोल और स्टॉक इंफॉर्मेशन, मेन फ्रेम, पीसी एंड मैग्नेटिक टेप, पेरोल मास्टर फाइल अपडेटेड, पे स्लिप क्रिएटेड, ऑफन रन एट नाइट। प्रोसेसिंग डिसएडवांटेज इन बैच प्रोसेसिंग का एग्जांपल क्या है? प्रोसेसिंग शेड्यूल प्री डिटरमाइंड, एरर्स अनेबल टू बी करेक्टेड ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, शॉर्टिंग ट्रांजैक्शन डेटा, एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग। कंसर्न विद रियल टाइम ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग में
Concurrency, data cannot be changed by two users at same time. Data cannot be नहीं, batch processing में क्या होता है कि data change नहीं हो सकता है. Atomicity, steps completed successfully as a group. If any step fails, no other step should be completed. Any step completed successfully as a group. If any step fails, no other step should be completed. ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग मॉनिटर्स के लिए क्या है, सॉफ्टवेयर यानी मिडिलवेयर अलाउइंग रनिंग ऑफ ट्रांजानी, बिना सॉफ्टवेयर्स के ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग रन नहीं करेगा. मैनेज सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, प्रोवाइड इंटरफेस बिटवीन इनपुट डिवाइसेस एंड डीबीएमएस, प्रोवाइड्स डेटा सिक्योरिटी इंश्योरिंग transactions get lost corrupted. डिफरेंस बिटवीन रियल टाइम एंड बैच प्रोसेसिंग. रियल टाइम एंड बैच प्रोसेसिंग में क्या डिफरेंस होता है? रियल टाइम, ईच ट्रांजैक्शन इज यूनिक. ट्रांजैक्शंस आर, स्टूडेंट रियल टाइम्स में रनिंग टाइम में जो भी चेंजेस होते हैं उसको हम रियल टाइम यानी कि बोलते हैं. ईच ट्रांजैक्शन इज यूनिक. ट्रांजैक्शंस आर स्टैंड अलोन, रिक्वायर मास्टर फाइल टू बी अवेलेबल more often for updating. Fewer errors. Transaction data is validated and entered immediately. Infrequent errors may occur, but often tolerated, not practical to shut down whole system. More computer operators are required in real-time processing operations. And operations are not centralized. Batch processing में क्या है? Each transaction part of a group. Database not accessible all of the time. More errors. Data is organized and stored before master file updated. Errors can occur during these steps. Easier to maintain than real time. Data validation used to check the entry of transaction data. Procedure ensure transactions are correct and have been accurately stored in the database. Involve transactions initiation and field checking. Historical significance and manual transaction system. Historical significance, Univac in 1950, manual transaction system, business system operated without use of machines. यानी कि पहले जिस तरह हमारे यहाँ सॉफ्टवेयर नहीं होते थे, कंप्यूटर नहीं था, तो जैसे लेजर में जो एंट्री होती थी वो सब क्या है, मैनुअल ट्रांजैक्शन सिस्टम. हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस यानी कि यूनिवेक में 1950 में ये यूज हुआ था. Component of a transaction processing system: users, participant and people. Users take data and use it in another information system type. Participant conduct file processing. People from the environment directly enter transactions and perform validation. Example of real-time transaction processing: reservation system, motels, point of sale machine, लाइब्रेरी लोन सिस्टम. रिजर्वेशन सिस्टम यानी कि जहाँ से आप रिजर्वेशन कराते हो वो क्या है आपका रियल टाइम ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, यानी कि करंट टाइम में जो भी चेंजेस होते हैं. सेट असाइड सर्विस ऑब्जेक्ट प्रोडक्ट फॉर फीचर यूज. मॉडल्स, पॉइंट ऑफ सेल्स, टर्मिनल्स, सेल्स गुड्स सर्विसेज. लाइब्रेरी लोन सिस्टम कीप ट्रैक ऑफ आइटम्स बारोड फ्रॉम लाइब्रेरी. पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम का ये सर्वर से पॉइंट ऑफ सिस्टम अटैच होता है. प्रोडक्ट डेटाबेस, परचेज डेटाबेस, इन्वेंट्री डेटाबेस, कस्टमर रिसिप्ट, एमआईएस, इन्वेंट्री. तो सर्वर से कोई पीओएस सिस्टम से डेटाबेस यानी कि यूपीसी प्राइसेस जो आ रहे हैं. फिर उससे इन्वेंट्री डेटाबेस अटैच होता है, परचेज डेटाबेस, एमआईएस एंड इन्वेंट्री. Example of batch transaction processing: check clearance, return order, asking bank to pay money to person, bill generation and invoice for goods services supplied to customer, credit card sales transactions, take impression of customer cards. Database and files. Database collection of data types, hierarchical network and relation. Important feature for design: good data placement, short transactions, real-time backup, high normalization, archive of historical data, and good hardware configuration. Block of data, master file, information about business organization, transaction file, collection of transaction record, report file, data formatted for presentation, work file,
temporary file in the system used during processing, program file, instruction for processing of data. Data warehousing collect information from different data sources, consolidated, subject-oriented, historical, and read-only. Backup procedures, backup another copy of data, recovery process include backup, general checkpoint, and recovery managers. Types of recovery, recovery process, continued, magnetic tape, grandfather, father, son, partial backups. Updated in batch, updated in real time, other information process, collecting, generating transaction data, analysis data, data meet users information need, output from TPS in other systems. And hardware are MICR, magnetic ink character recognition, used by bank to read account numbers on checks, ATM, automatic teller machines, bank terminals performing deposit and withdrawals, barcode readers used in retail to collect product informations, forms, document used to collect data from a person's. Examples include sign-on sheet for payroll, on-screen forms, populates field in a database, wave form used to purchase item over the internet. Decision support system assist people to make decision by providing information models and analysis tools. Data mining used in DSS to find relationship and patterns in the data. Management information system provide information for the managers. Different types of report include scheduled report, forecasting reports, on-demand report, and exception reports. Key issues in designing an MIS or DSS. How a system will be modeled, how model of system will be handled by a computer, what data will be used, how far how far into the trends will be extrapolated. Issue related to transaction processing system, nature of work, non-computer procedures, bias, importance of data, control in transaction processing, nature of work, automation of jobs, the use of information technology to perform checks once performed by people as participants resulted in fewer jobs in banks. People are purchasing product by completing a waveform. Organization rely on TPS, manual backup procedure if system crashes, non-computer procedure may. When system up and running, user need procedure to enter manual transactions, bias, importance of data, data security involves series of safeguard to protect data encryption, coding data description, changing it backup, firewalls used on network to verify and authenticates all incoming data, important of data, accuracy, extend data is free from errors, error caused by mistakes in gathering data, data entry, mismatch of data, and person or out of date information, data validation, check data entry, check for missing data, too high or too low data values inconsistent with other data in wrong format, carried out using range checks, list checks, types of check, and check digit. Data integrity described reliability of data involves accuracy, currency, and relevance of data. Atomicity, all steps involved in transaction completed successfully as a group. Consistency, transaction successfully transform the system and database from one valid state to another. Isolation, transaction is processed concurrently with other transaction as if only transaction executing the system. Durability, all changes transaction make to database become permanent. Control in transaction processing start with collecting includes manner, GPS manipulate data, and way errors are corrected. Some people in management positions are willing to falsify transaction to promote carriers. Aspect of a transaction processing system relevant to a large retail company,
real-time transaction processing, manual transaction system, component of a TPS, credit card sales transaction database and files updated in a batch, real-time, other information processes collecting, nature of work, non-computer procedures and bias. Real-time transaction processing, it is important in organizations such as large retail company for the immediate processing of data and instant confirmation of transactions is specifically needed in retail environment where servicing a number of customers with a limited staff and a limited of time is usual. The four important characteristics of this, TPS stresses this. They are rapid response, reliability, inflexibility, and controlled processing. Also, the concerns of concurrency and atomicity are important in ensuring data is not mishandled or any procedures, public steps taken are completed successfully as a group or not executed at all. Manual transaction system. Manual transaction system are imperative in the retail environment because they were the conceptual basis for real-time TPS. They were used long before the rise in technology allowed by easier data collection and storage. Obviously, they have been around since trending and business took it is usually strides in similar styles who still cannot afford the technology corporation use. It is necessary to use manual transaction system to record business activities. Manual transaction system are based on a clear set of rules followed by a person. They make it easier to transmit the data into a format suitable for recording onto information technology. For example, computerization of manual transaction system brings benefit when used by a large retail organization. It increases the rate at which products are sold, which means more profit for the retail chain. The less time taken for a customer to purchase a product is invaluable in customer satisfaction as there are lesser queues, therefore lesser time spent on waiting. Also, manual transaction processing systems provide the retail chain with information in what product on demand. The retail chain capability capitalizes on this information on consumer habits and they can tailor their product to attract more customers, thereby meaning more profit. Component of TPS, I have already read examples of transaction processing systems, reservation system, I have already told you. Examples of real-time transaction processing, POS machine. Examples of real-time transaction processing, continued credit card sales. Transactions can be done over the internet at POS terminals are taking an impression of customer credit card. Both the POS system and the multi-page credit slip system rely on batch processing. We use them as an alternative to money. Database and files. Files, master file, transaction file, report file, work file, and program file. Which types of files are master file? Information about the retail chain's business. This is where the data is stored. Transaction file, audit trails and history for the retail chain. The report file, formatted user presentable data. Work file, temporary file, and program file. Backup procedures. Backup provides safety nets for data restores in case of a system crash malfunction. Without this, the retail chain will cease to make profit as a result of data loss. They are usually stored in save function. When a TPS fails, data must be recovered immediately for restoration. General keep track of company records on a physical medium and checkpoints. And recovery procedures, backward recovery, undo database changes, forward recovery, redo database changes, and recovery manager restores database to provide conditions and magnetic tape. So students, we have seen earlier, this is transaction processing systems. Transaction processing system अभी मैंने आपको बताया जनरली ये जो है रियल टाइम के लिए यूज होता है.
So characteristics of transaction processing system is batch transaction processing system, real-time transaction processing, data validation, historical significance of transaction processing system, and manual transaction systems. These are the characteristics of a transaction processing system. So students, अभी जो मैंने आपको बताया है वो ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, इट्स टाइप्स एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये इस तरीके से आपकी जो फर्स्ट यूनिट है वो यहाँ पर खत्म हो गई स्टूडेंट्स। तो अब हम लोग कल से नई यूनिट को पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।